Assalamu alaikum. My name is Amaki Haji. I am a student of MSc IT Morning, University of Education, Lahore, Multan campus. My final year project named Object Detection from Natural Scene and supervised by Ghulam Irtaza. Object detections based sound like vinegar in artificial intelligence, but in core exists with us in our life. Hiding in plain sight, the often fail to notice simple application of object detection around us. क्या आप कभी हैरान हुए हैं? How face unlock works on your smartphone? How self-driving cars operates on phone? The answer is object detection. So what is object detection? Technically object detection एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग शामिल होती है, जिसके जरिए हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को इमेज और वीडियो के थ्रू डिटेक्ट करवाते हैं. The idea is simple. Data are collected through computer vision. The data are then fed into the model and using machine learning algorithm. Our deep learning algorithm intelligence are them. The camera collects the image from different angles and sends to the image processing unit. चलते हैं कोड को रन करके देखते हैं कि वो कैसे वर्क कर रहा है. बेसिकली मैंने योलो के थ्रू ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करवाया है थ्रू इमेज. इसमें दो लाइब्रेरीज यूज़ हुई हैं, एक OpenCV2 और दूसरी NumPy. OpenCV एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो कि यूज़ की जाती है कंप्यूटर विजन में, मशीन लर्निंग में और इमेज प्रोसेसिंग में. OpenCV को आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो जावा हो, C++ हो या पाइथन हो. दूसरी NumPy जो स्पेशली बनाया गया है एरेज की मैथमेटिकली और लॉजिकली कैलकुलेशन के लिए. मैंने ऑब्जेक्ट को रियल टाइम में भी डिटेक्ट करवाया है थ्रू वेबकैम से, जिसकी एक्यूरेसी 99% है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.